What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Alan Wake 2। So Alan Wake के लास्ट वाले एपिसोड में हमने थोड़ा सा प्रोलॉग जो था उसको यहाँ पे कंप्लीट करा था एंड प्रोलॉग के बाद हमने थोड़ी सी स्टोरी को यहाँ पे फर्दर आगे लेके गए थे एंड आज के एपिसोड में हम स्टोरी को और आगे जो है लेके जाने वाले हैं। बट एपिसोड को शुरू करने से पहले आप में से काफी सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. एंड अभी भी कुछ जगह पे यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है कंप्लीट नहीं हुए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। काफी सारी जगह यहाँ पे लैग फील हो रहा है। ये कटसीन एंड कटसीन में जो है लैग फील हो रहा है, जो कि यूजुअली होना नहीं चाहिए। एक्चुअल गेम में भी यहाँ पे लैग हमें देखने को मिला था, बट यहाँ पे कटसीन्स में भी लैग है एंड आई गेस अपडेट के साथ यहाँ पे ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। एंड अभी हम फिलहाल आ चुके हैं इस टाउन में जहाँ पे हम उस बॉडी को जो है चेक करने वाले हैं। तो चलिए इस टाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे एंड फिलहाल अगर अभी आप देखोगे तो Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. ओके, तो लोकेशन यहाँ पे हो चुकी है। मैं थोड़ा सा बार ये एरिया को एक्सप्लोर कर लेता हूँ एंड भाई सिटी काफी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ओके, तो क्या इधर कुछ साइड मिशन है क्या? मैं श्योर नहीं, यहाँ पे डेड एंड शो कर रहा है एक एंड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ हमें सबटाइटल्स शो हो रहे हैं, बट आई गेस ये सबटाइटल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आई थिंक वी कैन मूव। लेट्स गो। बट कोई तो मैं वाटरफॉल के पास जाना है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। क्या आप मैं कॉफी यहाँ से? ओके, हाँ मैं आपको कॉफी नहीं दे सकते। एंड व्हाट इज दिस? डियर फेस्ट। ओके, तो अभी फिलहाल इस टाउन में डियर फेस्ट चल रहा है एंड उसकी अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चालू है डियर फेस्ट की। बट सीरियसली मैं भी श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है। क्या वो ये लोकेशन है? आई गेस यही वो शेरिफ है। The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ओके, तो एलेक्स यहाँ पे शेरिफ के साथ जो है बात करने वाले हैं एंड हम उस बॉडी को जो है एग्जामिन करने वाले हैं। क्या? ओके, आई गेस यहाँ से हमें शायद नीचे जाना होगा। वैसे तो एक रेस्ट रूम है। आई थॉट यहाँ से कोई एक सीक्रेट स्विच होगा जिस स्विच को हम ओपन करेंगे, बट ऐसा नहीं था। Hey there, Mr. Deer. You remind me of तो a हमें dream यहाँ पे I जो है had. ब्राइट फॉल का भी मैप मिल चुका है एंड ओके हम सारे के सारे रूम को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स प्रीटी गुड, एक्सपेक्ट नहीं करा था। ओके, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे दे रखा है एंड ये है वो रेस्ट रूम जिस रेस्ट रूम को हम यहाँ पे जो एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, ये तो मेन रेस्ट रूम है। Can't open this with my bare hands. ओके, तो हमें इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ चीज़ हमें जो है ढूंढनी पड़ेगी। आई वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक ही रूम जो है जो अनलॉक हुआ है वो है ये रेस्ट रूम। ओके, इसको मैं एक बार, ये डोर हमने कर दिया क्लोज। क्या यहाँ पे कुछ है जो मैं टिक कर सकता हूँ?
मुझे लगता तो नहीं यहाँ पे कुछ भी है जो मैं सच यहाँ पे जिसे पिक करके बाद में मैं जो है यूज कर पाऊंगा। एक बार थोड़ा सा बाहर की साइड चलते हैं एंड देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया हो इन स्टार्टिंग। कि इधर बस डियर है एंड डियर के साथ भी इधर हमने इंटरेक्ट करा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, हम इस रूम का एक्सेस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. वेट, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा वाटर रिपल इफेक्ट आया है यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे कुछ चीजें जो छुपाई गई है हमसे। Okay, I guess we are done with that. Let's just wait right over here and चलते अपने माइंड के अंदर। तो the cult of the tree, The तो cult of the दो tree. चीजें हमारे पास। What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है The Bookers दिल्ली। were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. तो चलो अभी फिलहाल इतना तो उन्होंने सच बोला है। एंड वेट, यहाँ पे रेडियो का एक नया ऑप्शन है जो कि मेरे पास पहले यहाँ पे नहीं था। वेट, क्या मैं रेडियो को क्लिक कर सकता हूँ? यस। Debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, ओके, लेट्स लीव दिस। एंड अब हम और क्या कर सकते हैं? ओके, बाहर यहाँ पे जो शेरिफ है, शेरिफ के पास चलते हैं एंड शेरिफ के साथ चल के थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जितना हमें मालूम चला है। क्या पता हमें कुछ नई लीड मिले। You can go ahead, Anderson. We'll be here. वेट, आई गेस हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे So you अब found आगे something, इंटेरोगेशन right? चलेगी। A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, Fez. God. Saga!
Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. चलो गाइस, हमें एविडेंस तो मिल चुका है, तो अभी हम यहाँ से जा सकते हैं बाहर. We got the cult necklace. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Okay, तो वहाँ पे Well, जो Casey, Nightingale I थी got a उसकी lead. बॉडी को अब हम जो एग्जामिन Looks like करेंगे. we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Okay, तो ये शेरिफ काफी तो पॉपुलर है यहाँ पे यार. And Hey, what ये do you know कौन सा about एरिया है? that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Okay, तो हम इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हम बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं. Downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. लीड द वे बोल के हम पहले अंदर आ गए. So this शेरिफ is कौन the दे Bright दे? Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. तो पहले एलेक्स को आने थे. काफी जल्दी है एलेक्स को, हमसे ज्यादा जल्दी है एलेक्स को. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. तो आई गेस हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे. Okay. यस, तो यहाँ Let's पे take a body- look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Okay, तो cause of death The में body shows signs of being submerged in water post-mortem. यस, अगर आप देखोगे तो उसके हैंड यहाँ It पे doesn't काफी add ज्यादा up. थोड़ा सा स्वेलो अप हो चुके हैं, जो कि पानी में ज्यादा टाइम पे रहने की वजह से. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing. How'd they manage that? यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज को, तो इसके ऊपर हार्ट पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड सेम गोज ओवर है, यहाँ पे कुछ चीज जो है यहाँ पे पुट कर रखी है. पहले चलते हम केस बोर्ड पे, एंड केस बोर्ड पे जाके हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे. वेट, एनीथिंग एल्स? हमारे पास एक ये फोटो आ चुकी है, तो इसको
Time to कंप्लीट see what करते हैं एंड एक Nightingale's नया body can tell जो us. है केस की जो लाइन है उसको यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे। ओके सो हमारे पास काफी सारी चीजें जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस पॉइंट पे। वेट ओके कॉज ऑफ डेथ नॉट दिस। वेट आई गेस ये यहाँ पे नहीं लगेगा एंड ये भी नहीं हो सकता, ये प्रोटेक्टिव है आई गेस, ये हो सकता है कॉज ऑफ डेथ में। ओके तो एक चीज यहाँ पे पेंडिंग है, ब्रूसेस को भी ऐड करके देखो क्या? यस Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. आई गेस हमें इसको और आगे जो है लेके जाना पड़ेगा। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस, क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ? यस रिचुअल राइटिंग, दैट्स प्रीटी गुड। एंड ये भी कुछ मेरे को ऐसी राइटिंग लग रही है। ओके There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? एंड जैसे मुझे स्टार्टिंग में भी लगा था कुछ तो है इसकी चेस्ट के अंदर एंड आई गेस मैं एकदम सही था। तो इसकी चेस्ट को ओपन करते हैं हम। एंड यस इसकी चेस्ट के अंदर से हमें एक कागज मिला है एंड इस पे भी कुछ आई गेस रिचुअल जैसी कुछ यहाँ पे लाइंस है। तो आई थिंक It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? वेट ये क्या हुआ? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. Okay, try to stay in the light to avoid being detected by enemies. ओके सामने वहां पे है बट मेरे ख्याल से मेरे को एक यही लाइट का सोर्स दिख रहा है पूरे में। He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Okay, safe haven will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. Wait. मुझको समझ आ रहा है ये जो गाय पुचा रहे हैं ना ये काफी अजीब सी चीज है। ओके चैप्टर 1 इसी के साथ यहाँ पे एंड होता हुआ।
बट अब ये काफ़ी सारी यहाँ पे मिस्ट्रीज जो है यहाँ पे आ चुकी है एंड आई गेस मिस्ट्रीज यहाँ पे धीरे धीरे जो है यहाँ पे और यहाँ पे आने वाली है. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? ये काफी अजीब What the चीज hell थी. is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. ओके यहाँ पे शेरिफ है ना. Saga was I guess. back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. ओके क्या और कुछ पेजेस है क्या यहाँ पे. ओके we were attacked by a dead man. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. What Right happened before to the things sheriff? got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. हाँ ये थोड़ा सा maybe. सेंस यहाँ पे बनाता है. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. ओके तो चलो पहले यहाँ पे हम चलते हैं माइंड के अंदर एंड माइंड में जितने भी क्लूज हमें मिले हैं आगे उन सारे क्लूज को पुट करते हैं. तो नाइटिंगेल अटैक्ड अस. A ये dead man हमारा turned नया into a चैप्टर यहाँ पे. monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. एंड आई गेस अभी यहाँ पे ओके हमारे पास कुछ यहाँ पे 2 पेजेस हैं. इन पेजेस को आई गेस में यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यस एंड एक और है इसको भी पुट करते हैं. इसके अलावा तो हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है अभी जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास एक ये मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिला था एंड चाहो तो आप लोग ये मैन्यूस्क्रिप्ट को रीड कर सकते हो एज यूजुअल. एंड इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे. वेट मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ तो यहाँ पे है जो मैं मिस कर रहा हूँ. वेट ओके ये वो डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो हमें मिले थे. ये वाला मैन्यूस्क्रिप्ट हमें जो लास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट अभी देखने को मिला था ये वो मैन्यूस्क्रिप्ट है. एंड रेडियो में भी यहाँ पे कुछ तो एक नया हमें देखने को मिला है. इसको हम चेक करते हैं. ये सिंपल बस एक रेडियो ही है कुछ ऐसा नहीं है. एंड मैप में भी शेरिफ स्टेशन अनडिस्कवर्ड मैप. ओके लेट्स लीव ऑल दिस. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. तो चलते हैं यहाँ पे वापस हम जो है ऑर्डर लेक की तरफ. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. सो जल्दी से चलते हैं हमें उस लेक की तरफ. एंड स्टोरी तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है क्रिएट कर रखी है. अभी तक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्टोरी में. सो स्टोरी वाइज तो एलन वेक तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. बट थोड़े से स्पेक्स ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द प्लेयर इस गेम को अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे. बस वही छोटी सी प्रॉब्लम है. अदरवाइज रेस्ट Nightingale एवरीथिंग इज and his फाइन. cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ओके वेट हमारी कार यहाँ पे पार्क नहीं है क्या. हमें Think वापस we'll से जाना actually पड़ेगा. find Nightingale? The pages haven't been wrong yet. The person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. वेट यहाँ पे ये लेडी यहाँ पे क्या देख रही है. उसको यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही है. मेयर
Satyr won't roll over. What's this? Merced won't roll over on the issues. Okay, I'm gonna vote take a quick Satyr. look around. Meet you back at the car. See you in a bit. I guess इसमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है. एंड मैंने क्या इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई गेस यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं. सो चलते हैं अब इस कार में एंड निकलते हैं कॉल्ड्रन लेक की तरफ, जहाँ पे मिस्ट्री जो है आगे और बढ़ेगी. मुझे लगता नहीं कि अभी मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व होने वाली है. कौन है जो मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस लिख रहा है, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है. नाइटिंगेल कैसे वैनिश हो गया. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. ओके, द कार कैन बी यूज्ड टू ट्रैवल बिटवीन लोकेशन. Rinse and repeat. तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉल्ड्रन लेक ही दिख रहा है. Or maybe 3. बेटा अभी इस पे मेरे को मार्कर आ रहा था, बट फिलहाल अगर ओके अब आ रहा है यहाँ पे मार्कर. सो लेट्स गेट टू कॉल्ड्रन लेक. एंड फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एमो की कमी है. एमो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी हम लोग के पास. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. ओके, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं इस लेक पे. बट आई गेस ये लेक उतना मेरे ख्याल से भी सही नहीं है. द हार्ट यहाँ पे अगला चैप्टर यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है. इस चैप्टर को हम जो अगले एपिसोड में कंटिन्यू करने वाले. ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा जरूर था, बट अगले एपिसोड को भी हम यहाँ पे थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ताकि आप लोग जो स्टोरी को काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें. यहाँ पे एपिसोड ज्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप लोग भी पूरे एपिसोड जो है देखें एंड उससे वॉच टाइम भी हमें मिले. एंड उसकी वजह से यूट्यूब थोड़ा हमारी वीडियोस को भी रिकमेंड करेगा. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस.